Good morning, students. This video session is for class 2nd students, subject mathematics, chapter number 2, addition. This is our lecture number 2. Today's topics are properties of addition and simple addition of two-digit numbers. So, beta, first of all, we will do properties of addition. Yes, beta. So, now we will learn about property number 1. Okay. So, in this, here we have to add 0, adding 0. So beta, when we want to add 0 to any number, okay, जब हम किसी भी नंबर में क्या ऐड करना चाहते हैं, 0 ऐड करना चाहते हैं, the result is the number itself. तो जो हमारा आंसर आता है ऐड करने के बाद, वो वही नंबर आता है जिस नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं. Let's see how. Like if we want to add 0 to 1, अगर हम 0 को किस में ऐड करना चाह रहे हैं, 1 में. So our answer is the number itself, that is 1. Okay. If we want to add 0 to 29, 0 को हम ऐड कर रहे हैं 29 में. So our answer is the number itself, that is 29. Okay. And if we want to add 0 to 103, 103 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 0. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 103. तो हमने इससे क्या देखा, चाहे वो किसी भी डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का या 3 डिजिट्स का नंबर है, बट हम उसमें ऐड क्या कर रहे हैं बेटा, 0. ओके, सो आवर आंसर इज द नंबर इट्सेल्फ. अंडरस्टूड. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, एडिंग 1. व्हेन वी वांट टू ऐड 1 टू एनी नंबर, अब हम क्या नंबर ऐड कर रहे हैं बेटा, 1. कोई भी नंबर जो हमें दिया हुआ है, अगर हम उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, we get the next number in our counting. जो हमारी काउंटिंग का नेक्स्ट नंबर होगा, हमें वो मिलेगा. Let's see how. If we want to add 1 to 6, अगर हम 1 को किस में ऐड करना चाहते हैं, 6 में, तो 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बेटा, that is 7. So our answer is the next number. Okay. Now, if we want to add 1 to 11, 1 को हम किस में ऐड कर रहे हैं, 11 में. So 11 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है काउंटिंग में, 12. So 12 is our answer. Okay बेटा. 134. 134 में हम 1 ऐड करेंगे तो 134 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 135. So in these all questions, what we have observed, when we add 1 to any number, किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें उस नंबर का नेक्स्ट नंबर मिलेगा. जैसे 6 का हमें मिला 7, 11 का क्या मिला 12, 134 का क्या मिला 135. अंडरस्टूड. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, ऑर्डर ऑफ एडिशन. अब ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ एडिशन का मतलब है कि जब हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या फिर 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो भी उनका जो आंसर है वो सेम रहेगा. 2 और मोर नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर में अगर हम उसको ऐड करें, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम. Let's see how. Here we have two numbers, 5 and 2. Now हमने फर्स्ट नंबर पे 5 को रखा और सेकंड नंबर पे रखा 2. तो 5 plus 2 कितना होता है बेटा, that is equal to 7. अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जो 2 था उसे तो हमने फर्स्ट नंबर पे रख दिया और जो 5 था उसे हमने सेकंड नंबर पे रखा. तो 2 plus 5 भी क्या होगा, 7. तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर जो है वो क्या आया, 7, and that is same. Understood. तो इसका मतलब जब हमने दो नंबर्स को ऐड किया किसी भी ऑर्डर में, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. नाउ इन बी पार्ट वी हैव 3 नंबर्स, 5, 3 and 2. तो यहाँ पे हमने पहले 5 को रखा, फिर 3 और फिर 2 और ऐड किया, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 10. ठीक है. अब यहाँ पर हमने पहले 3 को रखा, फिर 2 को और 5 को हम ले गए लास्ट में. ओके, दैट इज इक्वल टू आल्सो 10. एंड नाउ हियर
हमने 2 को फर्स्ट नंबर पे रखा, 5 को बीच में रख दिया और 3 को लास्ट में रख दिया, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 10। तो किसी भी ऑर्डर में अगर नंबर्स हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है बेटा, लेकिन ऑर्डर अगर हमारा चेंज है तो भी हमारा आंसर एडिशन में क्या आएगा? सेम आएगा। नाउ एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरी ओवर। तो बेटा हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हम एडिशन जब करते हैं, इन एडिशन सम्स द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेड्स, ठीक है। जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन नंबर्स को हम क्या बुलाते हैं? एडेंड्स बुलाते हैं, ओके। एंड आफ्टर एडिंग द नंबर्स, जब उन नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द टोटल। जो हमारा आंसर आता है ऐड करने के बाद, ठीक है, वो उसका टोटल कहलाता है, ठीक है बेटा। तो जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उन्हें हम क्या बुलाएंगे? एडेड्स, ओके बेटा। एंड जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम क्या बुलाएंगे? टोटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, add 23 and 25. So first of all we will write places on it, ones and tens. So first of all we will write 23, after that we will write 25, okay, then we will put plus sign and then we have to add. Now beta see here at ones place, हमने आपको बताया था हमेशा हम ones place से start करते हैं और ones place हमारे right hand side वाली तरफ होता है, तो पहले हम ones place देखेंगे 3 and 5. So 3 in your mind and 5 on your fingers. So after 3 count 5. Yes, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 is our answer here. So ones place के नीचे हम लिखेंगे 8. And now here 2 and 2. So 2 in your mind and 2 on your fingers. After 2 count 2, 3, 4. So 4 is our answer. So the total of 23 and 25 is 48. Now in question number 2. Add 16 and 2. So here you can see that beta, here this is 2 digit number and here this is 1 digit number. Okay beta, so first of all we will write places ones and tens, then 16 and see beta यहाँ पर जो 2 है वो हमारा सिंगल डिजिट का है, तो ये वंस प्लेस के कॉलम में जाएगा यहाँ पे, और क्योंकि टेंस प्लेस के लिए हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 0. Okay, yes, after that we will put plus sign. Now we will add 6 plus 2. So 6 in your mind, 2 on your fingers. After 6 count 2, 7, 8. Okay, and 1 plus 0, that is equal to 1. Clear beta? Now add 46 and 3. So again, first of all write places ones and tens, then 46. After that 3. अब 3 क्योंकि सिंगल डिजिट है इसलिए हम उसके आगे 0 लगा देंगे ताकि वो हमारा 2 डिजिट का नंबर बन जाए, ओके बेटा। नाउ प्लस एंड नाउ वी हैव टू ऐड 6 plus 3, that is equal to 9, and 4 plus 0, that is equal to 4. Now in question number 4, add 55 and 4. Now ones tens, then 55, and after that 4. Okay, now we have to add it. Now 5 plus 4 is equal to 9 and 5 plus 0, the number itself, that is 5. Okay beta? Yes beta, now we have to add 62 and 2. So first of all we will write places on it. So first of all we will write ones and tens, after that 62 and then 2. Okay beta? And because 2 is our 1 digit number, so we will write it under the ones place digit. And here, because no digit is there, okay, so we will write a 0 here. Okay beta? So after that we will put plus sign, then we have to add now 2 in your mind and 2 on your fingers. Okay beta? 2 plus 2, that is equal to 4. And 6 plus 0, that is equal to the number itself, that is 6. Okay beta? Now in question number 6, and 66 and 21. So first of all we will write places ones and tens. Okay beta, after that first number is 66, so we will write 66. Okay, and after that 21. Okay, 2 under tens column and 1 under ones column. Now we will put addition sign
After that we will add 6 in your mind and 1 on your fingers. So जब हम 6 में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें next number मिलेगा, that is equal to 7. Now 6 in your mind and 2 on your fingers. After 6 you have to count 2. Okay, and that is equal to 8. Okay beta. Now add 31 and 55. So once 10, 31, then 55, then add 1 plus 5. अब 1 में हम 5 ऐड कर रहे हैं या 5 में 1 ऐड कर रहे हैं, same thing is there, that is equal to 6. Okay, and 3 plus 5, 3 in your mind and 5 on your fingers, that is equal to 8. Clear? Now add 81 and 80. ठीक है? So first of all we will write places, ones, tens, then 81, 18 plus sign. Okay. Now we have to add 1 plus 8. अब हम 1 के अंदर 8 ऐड करें तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा? 9. 8 में अगर 1 ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा? 9. तो यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? यस, ऑर्डर वाली. ओके बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर. Now add 57 and 21. So here 1 tens, 57, then 21, addition sign. Yes, now 7 plus 1, 8, 5 plus 2, 7. Now question number 10, add 38 and 10. So first of all we will write places, then 38, 10 plus sign. Now beta, 8 plus 0, same number we will get, 8. 3 plus 1, next number 4. Clear? Now today's homework, do the given sums in notebook. आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर HW लिखना है बेटा उसमें, जैसे मैम ने आपको सिखाया है how to make format. ठीक है? Then you have to do these sums in your notebook. Add 45 and 23, add 65 and 10, add 30 and 54, add 90 and 7. Clear beta? Now beta, homework discussion of lecture number 1. Okay, I had given you sums to solve. So our first sum is 34 plus 6. So when we add 6 to 34, we will get 40. Understood? Now 23 plus 7. Okay, so after 23 you have to count 7 numbers. Okay, and our answer is 30. Now the third question, 30 plus 5. So keep 30 in your mind and 5 on your fingers. So after 30 you have to count 5 and the answer is 35. 12 plus 3. So keep 12 in your mind and 3 on your fingers. After 12 count 3. Yes, that is equal to 1, 5, 15. Now 8 plus 5 plus 1 is equal to dash. So 8 plus 5, first we will add these two numbers, that is equal to 13. Then keep 13 in your mind plus 1. 13 plus 1 is equal to 14. Now in sixth question, 2 plus 4 plus 2. So 2 plus 4, that is equal to 6. 6 plus 2, that is equal to 8. Clear beta? Now in question number 7, 10 plus 2 plus 4. So 10 plus 2 is equal to 12. 12 plus 4 is equal to 16. So this is our homework. Thank you.